It's actually quite expensive. It's very expensive, even more expensive. It's an expensive sport. It's very expensive. लोग फिर भी खेल रहे हैं, लोग पैसे दे रहे हैं, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो खेलेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू प्रॉफिट। आज हम एक ऐसे स्पोर्ट के बारे में बात करेंगे जो दुनिया भर में तो मशहूर है ही, लेकिन वो पाकिस्तान में भी पॉपुलैरिटी हासिल कर रहा है। पेडल टेनिस क्या है, ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लिए क्या मायने रखता है और इसकी आगे पोटेंशियल क्या है, ये हम निस्मा से जानेंगे, जिनकी इस हफ्ते की स्टोरी इसी टॉपिक पर थी। अस्सलाम वालेकुम निस्मा, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। अच्छा, तो आपने इस हफ्ते की स्टोरी पेडल टेनिस पे की थी, तो ये क्या है, व्हाट इज द स्पोर्ट, हाउ डिफरेंट इट इज फ्रॉम अदर स्पोर्ट्स एंड व्हाट डज इट मीन फॉर द पाकिस्तानी स्पोर्ट इंडस्ट्री? तो पैडल टेनिस बेसिकली स्टार्ट हुआ था मेक्सिको में 1960 में, लेकिन वो पॉपुलर हुआ था स्पेन में 1974 में जाके। लेकिन उस वक्त अभी वो स्पेन तक महदूद था। पूरी दुनिया में उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो शुरू तब हुई जब यूरोप को, बाकी ग्रेटर यूरोप को उसके बारे में पता चला। और कोविड के टाइम पे, क्योंकि ये बहुत सोशल स्पोर्ट है, ये बहुत रैपिडली ग्रो होने लगा बिकॉज पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे लोग आइसोलेटेड फील कर रहे थे और उन्हें एक आउटलेट चाहिए था, एंड पैडल वाज द परफेक्ट सोल्यूशन। तो इसका बेसिकली ये जो गेम है, स्पोर्ट है, वो टेनिस और स्क्वॉश का एक, इट्स सिमिलर टू इट बट इट्स नॉट एग्जैक्टली द सेम। उसमें फर्क ये होता है कि टेनिस में जैसे कि दो लोग खेलते हैं एक वक्त में, पैडल में चार चार प्लेयर्स होते हैं एक टाइम पे। दूसरी चीज ये कि पैडल की जो कोर्ट्स होते हैं वो चारों तरफ से ग्लास वॉल्स में बंद होते हैं, तो आप वॉल्स में से भी प्ले ऑफ कर सकते हो, जो कि टेनिस में नहीं होता, विच मेक्स इट स्लाइटली इजियर। लेकिन एक और लेयर ऐड हो जाती है स्ट्रैटेजी की। तीसरी चीज ये है कि पैडल कोर्ट्स जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं कंपेयर टू टेनिस कोर्ट्स। आप 3 पैडल कोर्ट्स बना सकते हैं एक टेनिस कोर्ट की स्पेस में। ओके, तो बेसिकली गेम इस तरह का है। ठीक है। एंड हाउ डिड इट कम टू पाकिस्तान, व्हाट बॉट इट हियर, वो सडनली इतना पॉपुलर कैसे हो गया? आप अगर किसी भी पैडल प्लेयर से बात करेंगी जो कि बहुत पैशनेट है, या तो वो लेजेंड जरीना का नाम लेंगे, या वो आपको बताएंगे कि उन्हें दुबई में पता चला इस गेम के बारे में। बेसिकली एक बहुत अबैंडन्ड सा स्क्वॉश का, नहीं सॉरी, एक हॉकी फील्ड होती थी खड्डा मार्केट कराची में। वहां पे टोटल स्पोर्ट्स एक कंपनी है, उन्होंने एक स्टेडियम बनाया, और फिर वो दे वर द फर्स्ट वंस टू ब्रिंग पैडल टू पाकिस्तान। और पाकिस्तान में अभी बहुत लिमिटेड कमर्शियल पैडल कोर्ट्स हैं। जो प्रोमिनेंट वाले हैं वो सिर्फ 4 इस वक्त जो लेजेंड्स अरीना के अंदर हैं वो हैं। और ये लोग ही पाकिस्तान में स्पोर्ट को लाए थे बिकॉज दे सॉ लॉट ऑफ पोटेंशियल। दुबई में वो स्पोर्ट इतना पॉपुलर हो गया था कि उनके जो लीडर हैं, ही सेड दैट ऑल हाई एंड फैसिलिटीज एंड होटल्स नीड टू हैव पैडल कोर्ट्स, एंड दे हैव बोथ इंडोर एंड आउटडोर कोर्ट्स। तो वहां से बेसिकली आइडिया पाकिस्तान में आया, एंड इट took root very quickly to the point where it's expanding really quickly now, and a lot of people are thinking of making paddle courts in the country. अच्छा, सो अभी तो लोग सोच रहे हैं, आपने कहा, तो अब हमारे पास ऑलरेडी पाकिस्तान में कितने पैडल कोर्ट्स हैं? कमर्शियल कोर्ट्स की बात करें तो बहुत ज्यादा नहीं है। 4 कोर्ट्स इस वक्त लेजेंड्स अरीना में हैं, वो अपना 5th कोर्ट करंटली इंस्टॉल कर रहे हैं। एक और जगह है अरीना जहाँ पे लोग बॉलिंग के लिए जाते हैं कराची में, वहां पे एक कोर्ट है, बट दैट्स लाइक यू नो जस्ट फॉर द सेक ऑफ हैविंग अ कोर्ट। और जहांगीर खान कॉम्प्लेक्स में 2 कोर्ट्स हैं। उसके अलावा इस्लामाबाद, लाहौर में अभी आई एम नॉट श्योर कितने कोर्ट्स हैं, बट लेस देन 2-3। एक और नई ऑर्गेनाइजेशन है क्लब पैडल, जो कि लाहौर में अभी करंटली बना रहे हैं पैडल कोर्ट्स, एंड दे प्लान ऑन एक्सपैंडिंग टू इस्लामाबाद लेटर। सो रफली 10, हार्डली 10 कोर्ट्स इन द कंट्री राइट नाउ, but it's expected to grow according to Talal Khan, who's the CEO of Legends Arena. वो कह रहे थे कि 2 साल के अंदर हमें 50 to 60 कोर्ट्स मिल जाने चाहिए कंट्री के अंदर, और कुछ सालों में हम आराम से 100 कोर्ट मार्क रीच करने वाले हैं। ओह, ओके, दैट साउंड्स प्रीटी इंटरेस्टिंग। तो इसका मतलब पाकिस्तान में इसका क्या पोटेंशियल है टू बिकम अ मेन स्ट्रीम स्पोर्ट, क्योंकि लोग यहाँ पे ज्यादातर क्रिकेट देखते हैं, इट्स द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट, या कभी कभी कोई आई थिंक कोई फुटबॉल देख लेता है, हॉकी आई थिंक नेशनल स्पोर्ट आई थिंक थी, जो अब मतलब आई डोंट थिंक एनीबडी टॉक्स अबाउट इट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट पैडल, तो इसका क्या पोटेंशियल है एंड एक्चुअली हाउ एक्सपेंसिव इट इज? There's 2 things.
एक तो ये है कि because paddle is a social sport, and because the adrenaline rush that you get from playing paddle is much better than tennis according to players. और एक और चीज ये है कि एंट्री लेवल बहुत आसान है, आपको बहुत हाई स्किल नहीं चाहिए होती है. इट्स वेरी इजी फॉर बिगिनर्स टू गेट अ हैंग ऑफ इट. इन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से पैडल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है. लेकिन इशू यही आ जाता है कि इट्स नॉट अफोर्डेबल फॉर एवरीवन. इट्स एक्चुअली क्वाइट एक्सपेंसिव, नॉट जस्ट बिल्डिंग अ पैडल कोर्ट बट आल्सो द इक्विपमेंट दैट यू यूज टू प्ले पैडल. पैडल का जो एक रैकेट है दैट्स रफली 30,000 रुपीज आई थिंक. और जो बॉल्स होती हैं पैडल की, वो 3 बॉल्स का सेट आता है 4,000 रुपीज का. और एक बॉल की जो लाइफ स्पैन होती है दैट्स रफली 4 आवर्स ऑफ गेम प्ले. So it's very expensive, and building a paddle court is even more expensive. According to the Legends Arena, if you want to build a paddle court जो international standards को meet करता हो, तो उनको 15 मिलियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट पड़ी थी. और अगर आप सस्ते से सस्ता करने की भी कोशिश करें तो आपको 10 मिलियन रुपीस तो इन्वेस्ट करने पड़ेंगे. तो ना तो बिल्ड करना सस्ता है और ना खेलना चीप है. इवन इन दुबई इट्स एन एक्सपेंसिव स्पोर्ट इनहेरेंटली, लाइक पूरी दुनिया में ही ये महंगा है. दुबई में तो आपको 1-2 घंटे खेलने के लिए आई थिंक फोर 200 दिरहम, इट्स रफली 15,000 पाकिस्तानी रुपीज. तो आप अंदाजा लगा लें कि it's very expensive. But right now in Pakistan the demand is high and the supply is very limited. उसकी वजह से भी थोड़ी prices high हैं. जब हम ज्यादा पैडल कोर्ट्स आते हुए देखेंगे कंट्री में और लोगों के पास ऑप्शन ज्यादा होंगे, तो इट्स एक्सपेक्टेड कि प्राइस थोड़ी कम हो जाए. लेकिन दैट इज स्टिल नॉट रियली अफेक्टिंग द पॉपुलैरिटी अलॉट. लोग फिर भी खेल रहे हैं, लोग पैसे दे रहे हैं. लेजेंड्स अरीना 22 आवर्स अ डे फंक्शनल रहता है. वो रात के 3-4 बजे तक वहां पे लोग पैडल खेल रहे होते हैं. उनको रोज 500 से 800 तक की बुकिंग्स होती है लोगों की पैडल की. और अब तो ऐसा पॉइंट आ गया है कि लोगों को फ्री स्लॉट्स नहीं मिल रहे होते. So it's very popular. People are comparing it to चाय ढाबाज, कि like किसी ने कॉन्सेप्ट लाया और फिर वो एकदम से इतनी रैपिडली ग्रो हुआ कि everywhere you go you can find a chai dhaba that's female friendly, that you can just hang out. Some other people are comparing it to Pilates. So you know how it was the new cool thing to do. It's an active, like it's an activity. You're not sitting idle, but it's also for the shashke. तो ये है कि अगर उसको मेन स्ट्रीम करने की कोशिश नहीं करी, अगर उसको चीप करने की कोशिश नहीं करी कुछ हद तक, तो शायद पाकिस्तान में मेन स्ट्रीम स्पोर्ट नहीं बन सकता पैडल. लेकिन आई थिंक उसकी पॉपुलैरिटी को हम फिर भी चैलेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो खेलेंगे. Okay, so you're saying it's popular because it's a social sport? Yes. So after work you can either hang out with your friends or you can go to the gym. आप दोनों चीजें नहीं कर सकते, आपको टाइम निकालना है, पॉसिबल ही नहीं होता for people who are either studying in a university or working a full-time job. Paddle में ये it combines the two. It's a 4 people game. It's almost like a social affair at this point. So you are engaging in like an active thing while also hanging out with your friends. So I think that aspect really it contributes to the sport's popularity. Acha Nisma, so like you've talked about pedal sports, you've talked about how expensive it is, but what are people who are actually playing the sport? What are they saying about it? So a lot of people who are playing right now were either introduced to the sport by a friend, or they, like, you talk to any Pakistani who's been to Dubai and plays paddle, you will hear them say कि oh हमें दुबई में पता चला था, हमने पहली बार उधर खेला था, and we were really excited to find out that there is like an option to play paddle in Pakistan now. Some people said that it started with like 4 people, like a 4 people WhatsApp group, and it has grown to like 200 people, 50 people, अलग-अलग WhatsApp groups बने हुए हैं. So it's they love it. Like people are actually like quite crazy about paddle. जो लोग खेलते हैं वो they're willing to pay, if someone's willing to pay 6,000 rupees, जो roughly like आप 4 लोगों में divide करो भी तो काफी ज्यादा ही होता है.
So they really like it, and I think Pakistan mein we have very limited recreational activities. लोग खाना खाने चले जाते हैं, लोग विंडो शॉपिंग करने मॉल चले जाते हैं, और जो यूजुअली लाइक जो स्पोर्टी एक्टिविटीज होती हैं उसके लिए आपको क्लब मेंबरशिप्स चाहिए होती हैं, एंड क्लब मेंबरशिप्स आर रियली एक्सपेंसिव. इफ यू लुक एट जिम खाना, you're essentially giving like 1 crore rupees for a membership. तो लेजेंड्स का ये है कि इट्स पे एज यू प्ले, सो यू इट्स नॉट अ कमिटमेंट. आपको एक बहुत ज्यादा एक साथ पैसे नहीं देने पड़े, आपको मंथली पैसे नहीं देने पड़े, और आप जब चाहें आप खेल सकते हैं. सो आई थिंक दैट एस्पेक्ट रियली लाइक कंट्रीब्यूट्स टू व्हाई पीपल लाइक इट सो मच. और कुछ लोगों का ये कहना है कि इट फील्स लाइक रमजान ऑल ईयर राउंड. तो सिर्फ रमजान में लोग इफ्तारी के बाद एक्टिव हो जाते हैं, और दे स्टार्ट लाइक having all these boot camps and stuff. So they're like weekly paddle matches में उनको रमजान वाली फीलिंग आती है. That's what people are saying. Okay, thank you so much, Nisma, for joining us and sharing your insights, and good luck.